Mr. Professor Javed Sahab to kindly come and share your valuable experiences with us. I'm Javed, and I am an English teacher. I am an ESOL teacher from the UK. I have taught in various countries, including the UAE, Vietnam, and the UK itself. I have also done several other qualifications related to English language teaching, including CELTA. Recently, I returned to Kashmir. I think it was a couple of weeks ago, and truth be told, I have known Dr Makhdoomi for over 5 years now, but it was only through social media. So a couple of weeks ago, I decided to drop down to his office, and that's where we met for the first time. And during that meeting, I came to know about this incredibly ambitious initiative of his. And my first thoughts after hearing about this initiative were of pure elation and joy, knowing that somebody has finally stepped up and has the audacity to change our rotten, our ailing education system. And not only that, but also to help our youth, which I'm sorry to say, but is despondent and depressed and unemployed most of the time these days. So to provide that youth which is hurt and desperately needs guidance, to provide that youth with opportunities and a level footing with the rest of the world, so that they have that employability factor going into the future. So I really commend Dr Makhdoomi for actually coming up with this vision and having the temerity to actually go ahead with this. So that's enough about how I felt, about how I feel about this initiative. I would like to reiterate why we desperately need this kind of university. First of all, we as human beings, we are conditioned to do something for our nears and dears. So usually that compassion only extends to our own, so our daughter, our son, maybe our wife, our brothers and sisters. But beyond that circle of our immediate people around us, our blood relatives, that compassion rarely extends. And so that's what we're here to change. We're here to bring a new perspective where we are not only looking at ourselves and feeling good about how we've done and how our families are doing, but we are looking at the region as a collective and doing something holistically for the whole region. So moving on from that, the need of the hour, why we need a university like this, the answer is very simple, and we carry it, we literally carry it in our pockets all the time. If you look at this piece of technology right here, we are faced with something that we really can't compete with going into the future. And it's really important to stress that because when it comes to repetitive tasks, as we've already known, we cannot compete with machines. So we have to have something extra. And the world is now in the midst of this fourth industrial revolution. So we have to change our course. We have to have a new course of action. And if we don't change our course, we are going to be left behind, not by years, not by decades, but by light years. Because the speed at which this technology is spreading, at which is accelerating, is beyond comprehension of an ordinary man. So that's very important. So that's why we need a university like this, which can bring courses. So we can do that by basically bringing new and innovative courses, by basically inculcating a culture of robust student exchange programs and faculty exchange programs, where we could bring the knowledge from outside to over here, and our students could go from here to overseas, and we could have a collective understanding of how the world works.
not just only our perspective on how things should be run in this place. I'd like to keep it brief, but I'd just like to make one more point about the brain drain. Talent is almost ubiquitously spread around the world. It's not as if one culture or one nation produces more intelligent people than other. It's ubiquitously spread. So almost every country, every race, every culture has a fair share of talented, unique people. And our valley, our region, is no different. We are just as capable as any other culture out there. But the trouble is, we are in a rut. We are doing the same things over and over again and expecting a different result. And unfortunately, that's not how things work in the real world. So we need to change that, because the best of our people, like people said before me, the best of our people go to foreign universities, go to foreign countries, and actually, those people who get those people, hire those people from here, they get to utilise their potential, their talents, for their benefit, and we're just left high and dry. So what this has done, basically, this has depleted our region for far too long, and it has to stop. This brain drain, this talent hemorrhaging, it has to stop somehow. And the Uni4kashmir initiative, I'm proud to say that we are presenting you with an idea where people will have an alternative, where the cream of the crop will have an alternative in the form of substantial and substantive and sustainable alternatives. I think that's pretty much it now. I think I'd like to keep it brief. I'd leave the details to my chairman. And before I go, I'd like to say one more thing, sorry. One final thing. See, anybody could come up with the universities. Universities come, universities go, colleges come, colleges go. And so anybody with money, capital and vision can create a university. But the university of this nature, what we are talking about here, is absolutely momentous. It's a massive thing. Of creating or of establishing a university of Ivy League level, of the Russell Group level, where it basically competes with the likes of Howard, with the likes of Oxford and Cambridge. So this is quite a big deal. So to run a project like this, we need people like Dr Mehboob, who have first-hand knowledge of how these institutions are run abroad. So that's why we need his expertise. He doesn't need to be here. He doesn't need to be here. He's left his illustrious career behind to help this ailing nation and to give us a vision so that we can get behind it, basically. So thank you very much. Thank you for listening and for your attention. I'll leave to my chairman to explain the rest. Thank you very much, sir. Now, इंतहाई एहतराम के साथ दावत देना चाहूँगा म्यूनसिपल कमेटी हाजिन के चेयरमैन मोहतरम इरशाद अहमद वानी साहब को कि वो डेस्क पर तशरीफ लाकर अपने ज़री ख्यालात का इज़हार करें। इरशाद साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। वाजिबुल एहतराम डॉक्टर महबूब मखदूमी साहब, सईद हुमायूं कैसर साहब, हमारे सदर औकाफ हाजी गुलाम नबी डार साहब, हाजी मुश्ताक परी साहब, डॉक्टर अमीन फयाज साहब, तहसीलदार हाजिन चेम्बर साहब और सारे इंटेलेक्चुअल्स जो भी यहाँ बैठे हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। क्योंकि कल ही शाम को मुझे मालूम चला, मजाजी साहब मेरे पास आए इन्विटेशन लेके,
इस प्रोग्राम के बारे में, और जब उन्होंने थोड़ी बहुत जानकारी दी तो बहुत ही खुशी हुई सुन के, और सारी मसरूफियात छोड़ के मैंने सोचा कि यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मिशन लेके डॉक्टर मखदूमी साहब चले हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए बस इतना कहूँगा कि जिस सरजमीन पे आप इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ बहुत से स्कॉलर्स, मुफक्किर, शोरा हजरात ने जन्म लिया, और जब हम नज़र दौड़ाएंगे तो आपके श्रीनगर शालटेन से लेकर बाड़ीपोरा तक, सोपोर तारजुआ तक, ये पूरा एरिया, इसमें जितने भी इस वक्त ऑफिसर साहिबान आपको मिलेंगे तो शायद वो यही कहते मिलेंगे कि हमने इब्तदाई तालीम इस हाजिन से हासिल की, हमने इब्तदाई तालीम इसी एमएल हायर सेकेंडरी स्कूल से हासिल की है, जिस हायर सेकेंडरी स्कूल में आप इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये इलाका इस वक्त भी जब आप देखेंगे तो मेरे ख्याल में सराउंडिंग्स में जितने भी एरियाज है, बांडीपोरा तक, श्रीनगर तक, यहाँ जब आप देखेंगे इस वक्त भी यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर्स, मेजॉरिटी में यहाँ स्कॉलर्स मिलेंगे आपको हाजिन। लेकिन बहुत पॉलिटिकल इनजस्टिस हुई हाजिन के साथ। पहले तो अल्लाह पाक की तरफ से थोड़ा बहुत ये हुआ कि हाजिन को पूरे इस एरिया में एक मरकजी मुकाम हासिल था, और कुछ फ्लड्स की वजह से वो यहाँ से जितने भी ऑफिस वगैरह शिफ्ट करने पड़े, यहाँ से दूसरे इलाके सुंबल में नियर बाय है हमारा एक और तहसील, और बाद में हमें बहुत सी काउशों के बावजूद हमें जो यहाँ दोबारा तहसील हेडक्वार्टर मिला। लेकिन बाकी सारे शोबे जो हमारे हैं, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो और कोई शोबा है, उसमें हमारे साथ बड़ा ही नाइंसाफी हुई है और पॉलिटिकल इनजस्टिस भी हुई है। और जब कल मजाजी साहब ने मुझे ये बात बोली कि हमारे ये मिशन है, डॉक्टर महबूब साहब जो है ये मिशन लेके चले हैं, तो हमने ये सोचा है कि अगर हमारी भी कहीं पे जरूरत पड़े, मैं तो बहसती चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी हाजिन आपको ये यकीन दहानी देता हूँ यहाँ पे कि मुझे लगता है हाजिन का बच्चा बच्चा आपके साथ होगा इस मिशन के। और जो आपको हाजी मुश्ताक साहब ने यहाँ पे एक अपना वो खाका पेश किया कि जिस चीज का कंट्रीब्यूशन आपको चाहिए इस हाजिन से, हाजिन के लोग आपको साथ साथ मिलेंगे हमेशा। बाकी आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अगले मेहमान को दावत देना चाहूँगा। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर JNK बैंक मिस्टर रियाज अहमद शोगा साहब हैं, मैं उनसे इस्तदा करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाकर चंद कलिमात हमारे सामने की नज़र करें। या शोगा साहब। ये बताए गए तो एक्चुअली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ मैं आपके सामने खड़ा होकर बोल। यहाँ डॉक्टर हजीन साहब जैसे हमारे मेहमान बैठे हुए हैं, नॉलेजेबल पर्सन राज साहब जिन्होंने सभी कलब के साथ पहले ही ज़मीन देने की ऑफर किया है, तो मेरे को ये हैसियत ही नहीं बनती है कि यहाँ खड़ा होकर आपसे मुखातिब होता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ
कि ये आगाज़ कैसे हुआ। मैं भी आपकी तरह महबूब साहब के आर्टिकल पढ़ता था ग्रेटर कश्मीर में। यहाँ से मुझे उसके वो आइडियाज़ और उसके दिलचस्पी जो देखी मैंने, तो मेरा एक शौक़ पैदा हो गया उनके साथ मिलने का। मैं तब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर था गांधीनगर, क्योंकि ये वहाँ से ही रहते हैं, तो रास्ते में काब्ज में वहाँ से चौथा तारीख में मैंने उनसे पूछा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हमारी मुलाकात हो गई, तो हमने आगाज़ किया था कि कुछ करने के लिए। लेकिन मैं एक बात साफ कहूँगा कि जब आप अपने घर के मतलब आपका जो सरपरस्त है, अगर आप उससे रूठ गए तो आपका हक नहीं बनता है उससे कहें कि मेरे लिए बहुत अच्छे इंतजाम करो, खाने पीने के, दूसरी चीज़ दे दो, मुराद दे दो। आप अपने कामों पर खड़ा हो। एक मैं हिडन आपको कह रहा हूँ, एक चीज़ ये कंसेप्ट है। पहले हम इस्लामिक बैंकिंग की तरफ कुछ करना चाहते, कुछ बैंक ऐसा खोलना चाहते थे। मैं भी बैंकर हूँ, मेरी दिलचस्पी थी कि ऐसा हो जाए। फिर उसमें कुछ मसला आ गई, फिर उन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि ऐसा यूनिवर्सिटी का करेंगे। तो ये एक चीज़ हम कौम को देना चाहते हैं कि अपने कामों पर खड़ा हो। यूनिवर्सिटी बनाना कोई मामूली काम नहीं है, आसान काम नहीं है। यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके लिए न सिर्फ आपके पास ज़मीन और उसके ऊपर बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा होना चाहिए, बल्कि उसके लिए आपको गवर्नमेंट को मोटिवेट भी करना है। और एक कानून और एक्ट के जरिए यूनिवर्सिटी बनती है, ये एक हुनर पैदा करना है और एक कंसेप्ट देना है, लोगों को एक कंसेप्ट देना है कि हमें अब इंस्टीट्यूशन खुद ही डेवलप करना। क्राउड फंडिंग, मेरे लाख रुपया, मेरे 10,000 रुपया, मेरे 500 रुपये, मेरे 100 रुपये, कम से कम 100 रुपया, तो 100 रुपये से मैं मेंबर बनता हूँ, इस यूनिवर्सिटी का एक मेंबर बनता हूँ, क्योंकि ये एक तहरीक है, एक मिशन है। और आज अगर हम एक यूनिवर्सिटी बनाने में कामयाब हो गए, कल हमारे मेडिकल कॉलेज, कल पैरामेडिक्स के लिए इंस्टीट्यूशन बनेंगे, कल इंजीनियरिंग कॉलेज बने। तो ये इंस्टीट्यूशन बनाने से हम क्या करते थे, हम मैं देखता हूँ आज के एक नौजवान लड़के जो यहाँ खड़े बैठे थे बाहर से, इतना दिल बाहर निकलता है ये देखकर कि जोश और बलबला कितना है। ये बच्चे तो इसमें कुछ इनका बेनिफिट नहीं होगा। जब तक ये यूनिवर्सिटी बनेगी, ये बेचारे ऑलरेडी फील्ड में होंगे, पता नहीं कहाँ मुलाजमत कर रहे हैं, कुछ और कर रहे होंगे। तो लेकिन इनका ये एंथुसियाज्म देखकर कि कुछ करने के लिए, एक कौम के लिए कुछ करने के लिए, तो ये देखकर तो बिल्कुल इंसान का दिल भर आता है। तो महबूब साहब ने जो एक मिशन लेकर जो यहाँ आए हैं, अपना कैरियर छोड़ के, अपनी अपॉर्चुनिटीज छोड़ के, आराम छोड़ के, क्योंकि यहाँ काम करना आसान नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि पहले ही हम एक दूसरे पर शक करते हैं, हम अपने भाइयों को कन्विंस नहीं कर सकते हैं। सब नजरें उठेंगे, सब बातें उठेंगे, नहीं जी ये है वो है, क्वेश्चन हम ज्यादा पूछते हैं, काम हम कम करते हैं। लेकिन ये एक मिशन हम लेकर चले हैं, ये एक कंसेप्ट, एक आइडिया से शुरू हो गया, महबूब साहब के एक कदम से शुरू हो गया, लेकिन आप सब इसमें शामिल हैं। ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, इस यूनिवर्सिटी का कोई मालिक नहीं है, इसका प्रॉफिट किसी को नहीं जाएगा। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसका प्रॉफिट इसी यूनिवर्सिटी में काम आएगा, इसमें पढ़ने वाले बच्चों के लिए काम आएगा। मैं अपने आप को मैं प्रिविलेज समझता हूँ। मैं अदना सा खादिम, एक छोटा सा आदमी इस मिशन के साथ चला हूँ, इस कंसेप्ट के साथ कि अगर इसमें मेरा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होगा, मैं अल्लाह के पास जाके बताऊंगा कि मैं चाहे आपकी इबादत करने में नाकाम रहा, लेकिन मैंने अपने कौम के लिए, अपने भाइयों के लिए ये काम किया है। तो इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच शोगा साहब। Before I
invite our next speaker, it's important to mention that this speech shall be followed by a brief question and answer session, and the requirements of the session would be: a person asking question shall stand up, mention his name, his profession, and direct the question to our speaker. If you do not want to ask a question in person, you have a choice to put forward your question in writing. But please don't forget to mention your name and your profession. Not more than one question should be allowed from one person at a time. And in order to give chance to maximum audience, you shall not lecture, debate, or discuss. Now is the time to invite our keynote speaker. You have been so impatiently waiting for his arrival. He is associated with the universities in GCC region, helping improve quality and development in higher education. He has attended Harvard University, Boston to study international marketing and international business and economy. He has a PhD in behavioral economics and consumer behavior. Apart from his research degree in Cardiff University, UK, he has an MBA from IUP, Pennsylvania, United States of America. He has worked with many corporate American companies like Comcast, GM, Hilton Properties, and Bank of America. He has traveled across continents for his conferences and research. He is a member of the American Marketing Association. He writes for local and international papers on various issues like education, politics, business, theology, economics, Islamic banking, and finance. He has set out for an ambitious project of coming up with an international standard university in J&K. Yes, you got it right. Not hypothetically, you and him. I give you, gentlemen, respected Mehboob makhdoomi sahab. Please welcome. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Honorable dignitaries, especially our District Bandipura team, Dr. Sahab, Javi Sahab, Khurshid Sahab, and the cross-section of civil society, especially from Hajin area, who have made their presence out there, who have come down on our invitation, because Dr. Saab's invitation is my invitation, it's our invitation. So really glad and I appreciate that you accepted our invitation. Thank you very much. I'll try to speak in Urdu as well, or Kashmiri. I'll try to mix it. You know, I was here till 10+2. I'm Kashmiri, of course, so I can speak in Kashmiri, but I've been out for like 19 years now, and out of touch with the language, but in a normal, casual language with my team, I think I speak better Kashmiri than them, but when it comes to formally speaking, you know, those big Kashmiri words, I've never been exposed to that, but Urdu is fine. Just two things that I would like to say and end it. First, why am I doing it? And second, what's the need? The first question is personal. Like, why am I here? What is my motive? What is my intent? This is very personal to me because, I've not been living here, but I've been writing for Greater Kashmir. Like, I've had a weekly column. And this is totally out of sync from what I was doing. मैं जो वहाँ पे कर रहा था, उससे कश्मीर से दूर दूर तक कोई वाबस्तगी थी नहीं, और फिर यहाँ के अखबारों में लिखना, वो तो एक मतलब कोई sync ही नहीं था, कोई connection